reinforcement learning. सुपरवाइज लर्निंग में हमने ये देखा था ना, लॉरा। हम्म। तो लॉरा वाज जस्ट की कम रैंक के कम वेट वाले मैट्रिक्स यूज़ किए थे उसने, राइट, फॉर हमको एग्जैक्टली एफिशिएंट याद नहीं है ये लोरा में किया क्या था उसने। low rank adaptation. I think what they did was they froze the, so they wanted to train on a certain chat templates वगैरह वो सब, राइट। उसको नेक्स्ट वर्ड तो प्रेडिक्ट करना आता है प्री ट्रेनिंग के बाद, बट अभी उसको वो पर्सनैलिटी देनी है चैट असिस्टेंट वगैरह टाइप का, कि कैसे आंसर करना है, स्टार्टिंग विथ यूज़र एंड देन असिस्टेंट वाला वगैरह वगैरह जो ये था, एक टेम्पलेट था, राइट। बेस मॉडल वर्सेस इंस्ट्रक्ट मॉडल ऐसे टाइप का कुछ देखा था मैंने। हाँ हाँ, हाँ। राइट। हाँ ये रहा चैट टेम्पलेट्स, यहाँ पे कुछ था, राइट। ये सब उसको, बट हाँ these were created by humans, right, that's हम्म। why it's called supervised fine tuning, so that basically you are giving it a personality. Probabilistic वो सब तो उसको आता है प्री ट्रेनिंग के बाद, बट ये करना था, राइट, ये चैट टेम्पलेट्स वगैरह उससे ये करना था। और जैसे उसने एक एग्जांपल में एक एग्जांपल भी करके बताया, एक ये स्मॉल टॉक करके डेटा सेट लिया था उसने, हम्म। राइट। So the supervised fine-tuning process requires a task-specific dataset structured with input-output pairs. Each pair should consist of an input prompt, expected model response, and any additional blah blah blah. Right, तो ये सब था, और उसके ऊपर ये था फाइन ट्यूनिंग, हम्म। राइट। फाइन ट्यूनिंग तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी डेटा सेट पे था। ये भी स्पेसिफिक डेटा सेट है, बट इसमें आई थिंक ये था टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, एंगेज इन डायलॉग, यूज स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट्स वगैरह वो सब था। और जो पहले वाले डेटा सेट थे, दैट वाज मोर ऑफ अ न्यू डेटा सेट, दैट इट कुड बी अ प्राइवेट डेटा सेट दैट द मॉडल माइट नॉट हैव सीन एट ऑल इन द करेक्ट। प्री ट्रेनिंग, राइट। और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए वो ऐसा, सो दैट डेटा सेट वाज प्रेटी more closer to the pre-training वाला data set, because except that they hadn't seen that kind of data set. ये वाले data set ऐसे है कि पर्सनैलिटी देने के लिए टाइप है उसके, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है, कैसे डायलॉग करना है वगैरह वगैरह, राइट। हम्म। And LoRa was an sort of an efficiency algorithm, like not algorithm, but um, way of efficiently doing that fine tuning. Instead of fine tuning the entire model, what you do is you freeze इन this, अडेप्टर। right, you freeze this and create basically कुछ और वेट मैट्रिक्स ये करते हैं। और उस दिन अपन ने देखा ना, जय जमीना को बोला कि उसका डायग्राम बना के दिखा दे, और करेक्ट। उसने वो दिखाया कि छोटा छोटा करके फिर बाद में ऐड किया उसको,
और फिर मॉडल में डाला, राइट, दैट वाज लो रैंक एडaptation. तो क्यों कम वेट्स है तो कम इपॉक में काम हो जाता है उसका. Now after that comes the reinforcement model, in which case we are saying कि एजेंट अपने करंट पॉलिसी को देख के एक्शन लेता है, राइट, विच इज LLM, right, and environment gives a reward, Or penalty. right. Now that environment could be another LLM which has been trained to कौन सा सही है कौन सा गलत है टाइप का एक ह्यूमन ने उसको ये किया है विथ ह्यूमन फीडबैक वाला RLHF जिसको बोलते हैं. बट देयर इज एन एनवायरनमेंट, और कुछ हमने देखा कि कुछ चीज़ों को उसकी भी ज़रूरत नहीं होती. आई थिंक वो GRPO के कॉन्टेक्स्ट में था शायद, जिसमें कुछ फंक्शन टूल से भी काम चल जाता, तो तुम्हें अलग से ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है एक मॉडल को. बट इट कुड बी एनीथिंग, एनवायरनमेंट कुड बी अ टूल और LLM itself, but which can evaluate the action taken and give reward or penalty, and then based on that it will update its policy, right. The basic idea is we have a language model. In reinforcement learning we'll call it an agent. Instead of you we have the environment that gives the feedback. Role of RL in large language model. It makes it be helpful, harmless in this. While supervised training is an excellent producing structured outputs, or templatized chat वाले ये था, it can be less effective at producing helpful, harmless, and aligned responses. इसकी वजह से ये reinforcement learning है. Fine-tuned models might generate fluent and structured text that still is factually incorrect, biased, or doesn't really answer the user's question in a helpful way. Enter reinforcement learning. From human feedback, get human preferences. We might ask humans to compare different responses generated by the LLM for the same input. Problem tell us the responses which they prefer. For example, we might show human two different answers to question what is the capital of France, and ask them which answer is better. We use these human preferences to train a separate model called a reward model, and this reward model learns to predict what kind of responses humans will prefer. It learns to score responses based on helpfulness, harmlessness, and alignment with human preferences. Fine-tune LLM with RL. Now we use the reward model as environment for our LLM agent. The LLM generates the responses, the reward model scores them. In a sense, we are training LLM to produce text that our reward model thinks is good, or in other words, which it learned from the human preferences. Right? The reward model is akin to human preferences because it was trained on human preferences, because human preferences से वो क्या आंसर से वो train हुआ था. So that is the environment who rewards or penalizes the LLM. तो OpenAI का GPT-4, Gemini ये सब वैसे ट्रेन हुआ था RLHF से. There are a wide range of techniques for RLHF with varying degree of complexity and sophistication. In this chapter, we'll focus on GRPO, which is a technique for RLHF that is shown to be effective in training LLM that are helpful. Why should we care about GRPO? Let's briefly consider two other options, PPO and DPO. It uses policy gradient method to update the policy based on the reward from a separate reward model, which is the case which I think we just discussed. Separate reward model was later developed as a simpler technique that eliminates the need for a separate reward model using preference data directly, essentially framing the problem as a classification task between chosen and rejected responses.
डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन में समझा नहीं, बट वो बोल रहा है कि उसके लिए रिवॉर्ड मॉडल नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आंसर ही ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि उसको स्कोरिंग की शायद ज़रूरत ना पड़े, जो रिवॉर्ड मॉडल करके देगा. Creator develops a simpler technique that eliminates the need for a separate report model using preference data directly. जो human preference का data है वो directly is essentially framing the problem as a classification task between the chosen and the rejected. फिर भी कौन सा chosen है वो कैसे समझ में आएगा अगर reward model नहीं बताएगा तो? reward model ही नहीं है तो कौन बताएगा? और is it saying कि ये जो ह्यूमन प्रेफरेंसेस के आंसर है हाँ, वही डायरेक्ट, जैसे पहले से ही तुमने दिए है ना उसी में. तो वो पहले में क्यों नहीं हो रहा था? फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है रिवॉर्ड मॉडल की पहले में? लाइक अगर तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो तो एक डायरेक्ट आंसर से पहले ही तुमने रिवॉर्ड मॉडल. पहले दिया है, then reward model preference with reward function, fine tuning with नहीं, वो बोल रहा है कि यह ह्यूमन प्रेफरेंसेस से डायरेक्ट मैं एलएलएम को ट्रेन कर रहा हूँ, यहाँ पे रिवॉर्ड मॉडल को बीच में नहीं ला रहा हूँ. ऐसा कर सकते हो रिवॉर्ड मॉडल के वैसे भी लाने की कभी भी क्यों ज़रूरत थी? और इज इट सेइंग कि ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन है, एक हाँ, स्पेसिफिक टाइप के लिए काम आएगा, तो ये that जनरल? was rejected. हाँ, राइट, मतलब मैं एक आंसर चार प्रकार से आंसर कर सकता हूँ, तो इसमें ये नहीं आएगा काम, क्योंकि ये है या नहीं है टाइप का नहीं है, इसमें चार के लिए चार अलग स्कोर है, तो वैसे वाले केस में ये वैसे भी काम नहीं आएगा. DPN are complex reinforcement algorithms, their own data will not be gone. If you're interested, do this. Unlike DPN GRPO, group similar samples together and compares them as a group. The group-based approach provides more stable gradient and better convergence properties compared to other methods. GRPO does not use preferenced data like DPO. The reward signal from a model or a function. GRPO is text which obtains. How it obtains reward signals. It can work with reward model like PPO does, but doesn't strictly require one. It is because you can use the reward signal with any other function model that can evaluate the value. We could use a length function. Congratulations, you completed it. What are the key components of reinforcement learning? ये सब किया था उस दिन शायद ना. ये कर लिया. DeepSeek भी देखा था हमने. They will use RL only for fine tuning and basically don't use supervised fine tuning. RL से काम चलाते हैं. ये ना, the paper introduced a new reinforcement learning algorithm called GRPO. Indonesia will build on this knowledge and implement GRPO in practice. The initial goal of the program was to explore whether pure reinforcement learning could develop reasoning capabilities without supervised fine tuning. More thinking time to problem by re-evaluating its initial approach. This moment is noted. तो ये बोलता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है. SFT. One of the most remarkable discoveries in R10's training was the emergence of phenomena called aha moment. This phenomenon is somewhat similar to ये सब अपन ने देखा, राइट?
a multi-phase process. Let's break down the phases in the key innovation in the binary process in two models. R1 0 and this R1 फाइन ट्यूनिंग इसमें नन इसमें है फेस emergent and enhanced. इसका क्या मतलब है? रीजनिंग कैपेबिलिटी emergent versus enhanced. नो वर्ड इमर्जेंट मतलब खुद से आ रहा है और इट्स लाइक जस्ट बिगिनिंग टू हैव सम रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप्ड फॉर डेवलपिंग रीजनिंग कैपेबिलिटी. ना आई मीन इसमें emergent है तो इसमें भी emergent तो होना ही चाहिए ना. दिस इज लाइक नीचे लिखा है ना, नीचे the first para after this table says demonstrate the potential for pure reinforcement learning for developing reasoning capability. R1 builds upon this foundation with a more balanced approach that prioritizes both reasoning performance and usability. So emergent in this case means we begin to see some promise with DeepSeek R10, and it is enhanced with DeepSeek R1 because they're able to make some change in approach, making it more balanced so that it gives both reasoning performance as well as usability. तो R10 का usability थोड़ा कम है, I guess. And with this it's enhanced. unlike DeepSeek R1 to prevent early unstable cold start phase of adult training from the base model. Construct and collect a small amount of long COT data to fine-tune the model. Initial vector. This is designed to establish a strong foundation. From R10 to fine-tune. So this is for R1. उसमें सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग हो रहा है तो उसने एक स्मॉल लिस्ट ऑफ हाई क्वालिटी सैंपल्स यहाँ से उन्होंने चालू किया. Team used thousands of variety high quality samples from इसी से कुछ सैंपल उठाए और इसको फाइन ट्यून किया. Small but high quality data to establish strong baseline readability and response quality. This is supervised fine tuning. तो ये सब इनपुट आउटपुट वगैरह सब दे दाके उसको ये किया. That's a cold start. Cold start because it's a small data set, maybe 100-200. Reasoning RL capability building. After fine tuning the cold start, we apply the same large scale reinforcement learning process as employed in enhancing the model's reasoning capability, particular reasoning intensity tasks such as coding, mathematics, and blah blah blah.
reasoning RL focus and this is the actual RL phase, perhaps common to both DeepSeek R1 and DeepSeek R10. And the reasoning RL phase capability building. And the rejection sampling phase of the quality control. Unlike the initial gold start, which primarily focus on reasoning, this station processes data from other domains to enhance the model's capability in writing, role playing, and other general. Sampling phase. The model generates samples which are then filtered through a quality control process. So this is only charging used for supervised fine tuning. Now that we have a good understanding of the training process, let's look at the algorithm that was used to train the model. The author is going to not just your training for sub-RL, we adopt which foregoes the predict model. That's typically the same. क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे क्यों है? वो नहीं किया था क्यों मैंने? Explain clearly the context. क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ क्या? कॉपी नहीं क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या? या फिर वो वैसे ही कॉपी करता है?
So cold start phase, readability foundation already establish a baseline response quality. Method. Yeah, I think too much detail for this stage है ना? नहीं क्या ज़्यादा ही घुस रहे हैं नहीं नहीं ठीक है, कंप्लीट करते और निकलते हैं cold start phase. हाँ Supervised fine tuning on 10K ICORD samples from R10 outcome. 58% reduction in readability issues while preserving 92% reasoning capability. थर्ड Filter through. What is the main innovation of the DeepSeek R1 paper? GRP GRP algorithm is animal learning from preferences with and without reward modeling. What are the 4 phases of DeepSeek? cold start reasoning rejection diagrams How does GRP use group formation where it generates multiple solutions for the same problem algorithm together? What is the key difference between a DeepSeek R1 and DeepSeek? Advanced understanding of GRP and DeepSeek math. Culti? Culti Let's remind ourselves of the important concept of group formation. The model generates multiple completion for each problem. Difference training. The model learns from a reward function that compares that. So first is group formation. एक प्रॉम्प्ट के लिए जो अलग अलग आंसर बने उनका एक ग्रुप. Preference learning. The model learns from a reward function that compares a group of completions. Training configuration. The model uses a configuration to control the training process. What do we need to do? Implementation. Define a data set of prompts. Define a reward function that takes a list of completions and returns a result of list of rewards. Configure the training process with your data set. Define a simple reward function. Reward longer completion. When given a list of completions, just return the length of each. Configure training. Your data should contain prompts the model will respond to. The GRP will generate multiple completions for each prompt and use a reward function to compare them. कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की
So you take your model, you're doing RL on this model with this data set, which is nothing but a set of prompts. And for this prompt, this guy will produce number of solutions and use this reward function to score those solutions. The dataset should contain prompts that the model will respond to. GLP will generate multiple completions for each prompt and use a reward function to compare them. The reward function is crucial, it determines how the model learns. Here are two practical examples. Reward based on completion length. Reward based on matching a pattern. Right, so if there is a thinking involved followed by answer, so this looks like, so this is a regular expression which checks for this pattern for C in completion. तो बहुत सारे completion दिए उसने. If RE match इस C में ये पैटर्न मिला उसको तो 1 मार्क देगा, वरना 0 देगा. मतलब इस कंप्लीशन में उसको लगा कि वो थिंकिंग कर रहा है तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है. इट इज रिवॉर्डिंग थिंकिंग. Training configuration. Num generation, number of completions to generate for each prompt. आइडियल लेंथ अगर 20 है
20 से अगर ये कम होता, मतलब 5 होता, तो इसका 15 आता एब्सोल्यूट, और ये फिर -15 बनता। उसे क्या है, दिस इज व्हाट बट अगर 20 बनता तो 0 आता, बाकी सबके लिए नेगेटिव आता, विच इज़ अ पेनलाइजेशन। 0 आता तो ठीक होता। बहुत गर्मी हो रही है भाई मेरे को। Adjust the slider to see how the reward changes for different completion lengths. Length based reward. Adjust the slider to see how the ये उसका ही है क्या? Reward. क्या दिखा रहा भाई ये? शॉर्ट मीडियम, ओके। ये शॉर्ट आंसर है, मीडियम लॉन्ग टैक्स, दिस इज अबाउट medium length, this is about 20 hours. This is slightly longer completion, this is much longer completion. और मैं ideal length बोलूँ 20 30 बोलूँ, तो ये इसको रिवॉर्ड ज़्यादा दे रहा है ऐसा। Rule based rewards for verifiable tasks. For tasks with objectively correct answer, like math or coding, you can implement rule based reward functions. So the first one was called what? Length based rewards. Rule based rewards. Reward function for math problem with verifiable answer. Completion list. List of answers to the problem. Completion these answers. So given this example demonstrates a reward function for math problem with verifiable answer. This slider controls the tolerance for approximate answers. Alright. What is 5 plus 7? Calculate 12 into 6. Zero tolerance. 5 का tolerance. By the way, ट्रम्प वर्सेस इलॉन मस्क की फाइटिंग देख रहे हैं कि नहीं? Spectacle. It's a spectacle. It's like it's the new TV watching. Saas Bahu. सास बहू तो है, बट पैसा है तो आप किसी से भी पंगा ले सकते हो। पता नहीं, I don't know. There is a good chance it is orchestrated. ऑर्केस्ट्रेटेड इतने लेवल का नहीं है भाई कि मैं इन्वेंट हो, तो इनडायरेक्टली बोल रहा है ना कि वो आइंस एप्स्टीन वेप्स्टीन के इसमें है, दैट्स लाइक बिग ही है ना।
मतलब वो ठीक भी है तुम्हारे धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम कुछ ये भी कर रहे हो, बट एक हद होती है कि आप क्या इंसिनुएट कर रहे हो। इफ़ यू आर सेइंग कि यू आर अ पार्टनर ऑफ अ सेक्सुअल प्रेडेटर और वो सब, और एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा भी नाम है, मतलब बेसिकली आप यौन शोषण और उसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है या उसको जानकारी थी, इस टाइप का आरोप है वो भाई। This is not lot of things can be staged, and this is like a completely different ball game, and going nasty. पता नहीं। तो खैर ट्रम्प का कोई चारित्र बहुत अच्छा है ऐसी वाली बात नहीं है। मतलब एक तो बिजनेस माल प्रैक्टिसेस तो एक हो गया, एज अ बिजनेसमैन बहुत से लोग करते होंगे, बट एज अ ह्यूमन लेवल पे भी तो वो तो एक अलग ही आदमी है भाई। बट वो भी है खैर। मस्क का तो ये सीन था कि अगर ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करता तो कमला उसका धंधा वैसे ही खा जाती। तो उस टाइम पे तो उसको करना ही था। एंड देन ये भी है, बट मज़ा आने वाला है जो भी है। Format based rewards. You can also reward proper formatting, which was important. So for each completion, dot all. ठीक है, I think this example demonstrating what a function derives whether completion follows a specific structure. So reward function derives whether the completion follows a specific structure, either a think and answer or code and explanation using execution. Nice. ये structure is another type क्या Hmm. of reward? Correct. Code explanation, think answer. That's it. That's it. Fine tune a model with GRPO. Practical exercise. Let's do a practical exercise. First, let's install dependencies for the exercise. GPGPGP. Peft. Peft तो लॉरा वोरा के लिए था, फाइन ट्यूनिंग के लिए था। Import एक क्वेश्चन मेरा ये है कि if your reward model recommends a structure and none of the responses are in that structure, will it return, and it is designed to return zero for all, like it's a one or zero, then what does the LLM actually respond? Something like, I don't know. We can define it, but what happens in those edge cases? देखते हैं. लोग ही नहीं मिला उसको. बुक नॉट फाउंड बोल. क्या हो रहा है यार? Enter a GitHub URL. क्या सब चीज़ें?
चैप्टर 12 कहाँ गया? चैप्टर 12 ही उड़ा दिया उन्होंने। या 13 में डाल दिया, क्योंकि 13 तो है नहीं। सिंपल गूगल सर्च मार के देख ले, मिल जाएगा। और दैट फाइल नेम like specifically within One other way I have is this. और जन्म लेते लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया ना किसी आशिक ने मुझे ऐसा कर जाए। अरे यार, ऐसा अगर मैं करता, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ओ ओ, सेक्शन पता नहीं है लेकिन इसका क्या होने वाला है। GRPO फाइन ट्यूनिंग, GRPO फाइन ट्यूनिंग IPMB। क्या क्या यही प्यार है, बोलो यही प्यार है, तेरे बिन the selected GPU type was not available. किसने सिलेक्ट किया था GPU type? Change runtime type CPU GPU। ठीक है भाई, ठीक है। Okay, back to where we were। ये हटाओ, ये क्या है, ये क्या हुआ? Import and log into weights and biases. Weights and biases is a tool. WNB is a tool for logging and monitoring your experiments. We'll use it to log our fine tuning process. वो login बोल रहा भाई। You can do this without logging into it, but it's recommended. So we have this data set. Connecting, green, HOC, T4 क्या था? T4 was a GPU। स्टॉप कर भाई, रीलोड कर भाई।
This notebook shows how to fine-tune an LLM with GRPO using a TRL library. It is by Ben and Maxime. This is a minimal example. For a complete example, look at this course. Then you have a load model, Hugging Face TB, 135 million parameter instruct model. ये लॉगिन में हटाना है कि ऐसे रखना है वेट सिंबल्स ये वाला वो अभी तक पहला ही नहीं चला है, अभी चलो लॉगिन हटा देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ पूछेगा। ये डाउनलोड होना चाहिए। मॉडल आईडी, टॉर्च डेटा टाइप, डिवाइस मैप, attention implementation, blah blah blah, define reward function, define training arguments, push model to hub text, your model ID। मॉडल आईडी मेरा वो है जो मैं यहाँ पे डालूंगा, डेली एमएल, डेली एमएल, डेली एमएल। ये क्या, so there's this data set which is a dictionary और जिसमें है train, 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 train और इसमें क्या है, इसमें है features, right? क्या क्या था उसमें, prompt and completion, this, and if you ask for, let's say, वापस भूल गया मैं prompt and क्या था, prompt, ये let's say let me ask for first two prompts, so ये Reddit में से कहीं उठा के कुछ लाया है prompts, right? और पहले दो के prompts थे ये, और completion देख लेते हैं। What is this data set about? P selection data set, this data set is find in this, it says and summarize Reddit posts, I try to better talk, foot got impaired, को समराइज so TFL blah blah blah,
So given a prompt, completion is nothing but a summary. This is your data set to fine tune a model using GRPO. You choose a model. What is special about this model? This is a series of small language models available in three sizes. They are trained for a small corpus, curated collection of high quality education and synthetic small element struct. We fine tune the base models on publicly available data sets. Local application blah blah जो भी है चीज़ें बता रहा है वो. तो ये मॉडल आईडी फ्रॉम प्री ट्रेंड विच इज़ फाइन. ये सब मैं भूल गया. अटेंशन इम्प्लीमेंटेशन फ्लैश अटेंशन 2 उसका टोकन ऐसे लेके आए. मैं अभी तक तो ये सब SFT ट्रेनिंग लग रहा है. लॉरा कॉन्फिग कॉजल LM R16 मतलब वो 16 वेट्स थे राइट. ऐसा कुछ था. लॉरा अल्फा ऑल लीनियर गेट पेफ्ट मॉडल ट्रेनेबल. सो आई डू दिस. वो मॉडल लेके आया. टोकनाइजर लेके आएगा. लॉरा से तुम ट्रेन करोगे तो उसका कॉन्फ़िग ये है. और ये 4 चीज़ें करेगा और फिर कुछ तो प्रिंट कर रहा है बाद में. ट्रेनेबल पैरामीटर्स प्रिंट कर रहा है. ट्रेनेबल पैरामीटर्स इतने हैं राइट क्योंकि तुमने लॉरा लगाया जबकि टोटल इतने थे इस मॉडल के 135 मिल. So 139 into 10 to the power 6. So trainable is 3% of that. Right. So this divided by ये right 3%. इतने सस्ते में फाइन ट्यून कर रहे हैं क्योंकि तुमने लॉरा यूज़ किया. तो यहाँ तक तो अभी GRPO का एंट्री नहीं हुई है राइट. आई एम गेसिंग. नाउ यू डिफाइन रिवॉर्ड फंक्शन विच सेज कि 50 आएगा तो मैं 50 का 50 किया तो 0 आएगा. ये 0 रिटर्न होगा. बट मान लो 49 आया तो ये -1 होगा. एक ही कम हुआ तो -1, 2 कम हुआ तो -2. तो और उल्टा एक ज़्यादा हुआ तो भी -1 राइट. तो 0 के अराउंड मीन होगा उसका. तो ऐसा है वरना फिर माइनस. सो मोर नेगेटिव इज बैड स्कोर. एंड ये जिसका रिवॉर्ड फंक्शन है अभी GRPO आ रहा है पिक्चर में. और सो ये ट्रेनर है और पहले वाला भी ट्रेनर नहीं था क्या? अच्छा. सो लॉरा वो है कि लो रैंक वेट से मैं इसको ट्रेन करूँगा. वो SFT ट्रेनर से ट्रेन करूँगा या GRPO ट्रेनर से ट्रेन करूँगा वो अलग बात है. लॉरा कॉमन है दोनों में राइट. तो इस मॉडल को जो बेसिक मॉडल था उसको पेफ्ट मॉडल में डाल दिया जो कि लॉरा कॉन्फिग लेके डाला. तो इससे ये हुआ कि उस मॉडल का जो बेसिकली इतने वेट्स थे लॉरा डाल के हमने बोला हाँ इसके ऊपर हमने कुछ और उसमें वेट्स ऐड किए हैं बस उसी को ट्रेन करा विच इज़ अबाउट 3% ऑफ द ओरिजिनल वेट्स.
लेकिन ट्रेनिंग जीआरपीओ से ट्रेनिंग करो, ना कि एसएफटी से, राइट। और जीआरपीओ से क्योंकि तुम्हें ट्रेन करना है, तुम्हें एक रिवॉर्ड फंक्शन देना पड़ेगा, जो कि तुम यहाँ पे वो दोगे, राइट। और ये ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जब मैं ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट से ये पता चलेगा कि वो इपॉक्स विपॉक्स बाकी सारी चीज़ें इसमें होंगी, ट्रेनिंग रेट ये वगैरह वगैरह, ये ट्रेनिंग की साइकिल कैसे चलेगी वो ये डिफाइन करेगा, लाइक द हाइपर पैरामीटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। और जिसके बेसिस पे रिवॉर्ड दिया जाएगा वो यहाँ होगा, राइट। जो कि एसएफटी ट्रेनर के साथ वो सब चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे इसके आर्क्स होते, एक इसके आर्क्स, राइट, इसके आर्क्स होते हैं, जो भी पूरा ये नहीं है क्या। ये इसके हाइपर पैरामीटर्स होते हैं एसएफटी कॉन्फ़िग के, जो कि अभी जीआरपीओ कॉन्फ़िग के हाइपर पैरामीटर्स है। ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, ट्रेनिंग ये सब ठीक है। नाउ ट्रेन अ मॉडल, trainer dot train, okay, so let's see, अरे यार मेरे पास कोई लॉगिन तो करवा ही रहा है वो मुझसे, वो मानेगा नहीं। Wait.
क्या किया जाए भाई? किधर अटक रहा है वो, हमको समझ में नहीं आउट ऑफ मेमोरी आ रहा है. है. कोई और छोटा डेटा सेट लेके करते हैं. डोंट हैव टू टेक द सेम डेटा सेट. Can we edit this data set and take out half the rows? कुछ भी नहीं चल रहा है. साइल भाई क्यों ना बोल रही. ठीक है, तब तक आगे भी बढ़ते हैं अपन. ये सब है, ये सब है. Length. This is the length. The steps. Length. Not the other 50. The GRBT logs the reward from your reward function. The loss and a range of other metrics will focus on the reward function. And the loss, as you can check, the reward function was closer to 0 as the model learns. The cursor is the model is learning to generate text of correct length. You might notice that the loss starts at 0 and then increases during training, which may seem counterintuitive. This behavior is expected administrative with mathematical functions for control loss and proportion of the key divergence. Text that better matches the function once again to which more organization considers increase the divergence in the loss from
decrease or increasing? Decrease करते हैं. Device training exercise. उसका enable fetch attention to the chart के 3 कर लेते हैं. कुछ ना कुछ आ ही रहा है भाई इसमें. हालांकि उन्होंने ये मैं कमेंट आउट करता हूँ तो दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है यहाँ पे. Anyway, let's just look at this and get about the conclusion. Now we can generate a text with this model. I think एक डेस्कटॉप जीपीयू खरीदने का टाइम आ चुका है. In this exercise, we'll fine tune a model which $3,000-4,000 में आता है. बिल्कुल आता है. मैं कौन सा ना कह रहा हूँ. This exercise, you'll fine tune a model with GRPU using Onslaught to improve model's reasoning capabilities. Onslaught is a library that accelerates LLM fine tuning, making it possible to train model faster with less computational resources. चलो भाई, ये कह रहा है कि इसमें मजा आएगा. ये ना से हे ना everybody, ये हटा ही दे फिर. GRPU. तो अभी अनस्लॉट यूज करके करेंगे. ये वो बोल रहा है T4 पे चलना चाहिए. Now let's load Google's Gamma 3 1 billion instruct model and configure it for fine tuning.
max sequence length. Can you give me the LoRa rank? Smarter but slower. Fast language model from pre-trained. Dabba dabba dabba. Reduce if out of memory. पेफ्ट क्या करता है मैं वो याद दिला. बेसिकली लॉरा को एनकैप्सुलेट करता था. तो लॉरा को यूज करने का तरीका पेफ्ट से था. सो पेफ्ट इज मोर कोडिंग आई थिंक, बट द कंसेप्ट इज लॉरा. इसको देख के ऐसा लग रहा है कि लॉरा और मॉडल को बाइंड करता है सॉर्ट ऑफ. See, no, data preparation. No model name bits and bytes. इसने क्या डाउनलोड किया फिर? इसमें है क्या bits and bytes? Bits and bytes. This code loads the model in 4-bit quantization to save memory and applies LoRa for efficient fine-tuning. The target module's parameter specifies which layer of the model to fine-tune. Q projection, K projection, V projection, O projection, gate projection, up projection, down projection. Use gradient checkpointing enables training with longer contexts. ये नाम कहाँ से मिले उसको? QBO सब. गेसिंग कि मॉडल प्रिंट करेंगे तो कुछ ना कुछ मॉडल्स देखने चाहिए उसमें. ये प्रिंट करेंगे तो देखते हैं. For this exercise, we'll use this dataset which contains grade school math problems. We'll format the data to encourage the model to show its reasoning. Before providing an answer, first we'll define the format of the prompts and answers. Respond in the following format: reasoning and then answer. XML COT format. Reasoning, answer. Let's prepare the dataset. Dataset is prepared by extracting the answer and formatting it as a string. Function to prepare GSM8 के dataset. डेटा लोड किया. तो ये अगर मैं देखूं तो ये डेटा लोड किया. Question and answer. Natalia Soul clips to blah blah blah. Right. Betty is saving money. Betty only has only half the money. How much money? In the beginning, blah blah. ऐसा सब है. So what is it saying? ये डेटा मेरे पास आया.
डेटा डॉट मैप मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ यूजिंग दिस फंक्शन. एक्स का क्वेश्चन एंड एक्स का आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर. तो जो क्वेश्चन है वो कंटेंट में डाल रहा हूँ यूज़र रोल के अगेंस्ट, और आंसर उसका आंसर ले रहा हूँ और उसको एक्सट्रैक्ट हैश आंसर में डाल रहा हूँ. तो ये उसका टेक्स्ट था जो आंसर में था. इफ हैश इज नॉट इन द टेक्स्ट, नन रिटर्न करो. अगर है तो इसको स्प्लिट करो फर्स्ट. तो दिस इज ऑल द रीजनिंग एंड दिस इज द फाइनल आंसर. सो ये बोल रहा है कि इस पर स्प्लिट करो और उसका पहला मतलब आंसर, एक्चुअल आंसर निकाल के लाओ. दैट इज ऑल इट इज डूइंग. स्ट्रिप मतलब वाइट स्पेसेस निकाल रहा है. सो this is basically just the answer. And there is who is calling this guy. Now let's prepare the data set. तो डेटा यहाँ पे थोड़ा बदलेगा, जो ऐसा था वो ऐसा आएगा. आंसर पूरा ना आते हुए सिंपल आंसर आएगा, है ना. ये सब आया. टू योर क्वेश्चन, मॉडल किधर है भाई. ये मॉडल है 1 बिट का. अच्छा 1 बिलियन 1 बिट का गैस. ये है जो बोल रहा था कि कौन से इस पे लगा रहा है वो. राइट. हटा. In any case, 7473 ये है. ये क्वेश्चन है, ये आंसर है. Notice all answers like about have a hash hash hash, so we extracted. Right? तो वो सिर्फ 72 आंसर देगा. Now we create a system prompt which can be customized. We add 4 extra symbols for working out or thinking or reasoning section and a final answer. So there's reasoning start, reasoning end, and solution start, solution end. So this is the thinking part, and then this is the part where you're actually doing the solution after your thought through. And then there is a system prompt. System prompt is what you give to a LLM. You are given a problem, think about the problem and provide your working out. Place it between reasoning start and reasoning end,
and then provide your solution between solution start and solution end, and this is my prompt. Okay, and let's map the data set and see the first row. Gemini has a think deeper mode. Gemini का तो है. It, it will basically be following this, right? Mm-hmm. It will show you some thinking and finally it will show you some answer. Right. You know, Copilot and Grok both have it. So this is your dataset 0 before the transformation, and this is the dataset 0 after the transformation. Right. और उसमें क्या है? Sorry, मैं कुछ और सोच रहा था. So there is a prompt. ये prompt है, prompt वाला part है, which is a content and role as system. Okay, and then user role ये. तो ये वाला part है, ये यहाँ पे खत्म हुआ. There is an answer. ये क्वेश्चन कहाँ से आया? अच्छा, क्वेश्चन पहले से था ही, ये एक्स्ट्रा डाला तुमने. सो डेटा सेट में एक क्वेश्चन था, आंसर था. तो क्वेश्चन तो तुमने वैसे के वैसा रखा, आंसर में से ये वाला पार्ट हटाया और सिर्फ एक्चुअल आंसर रखा. सो क्वेश्चन तो वैसे का वैसा रहा, आंसर में से सिर्फ लास्ट वाला पार्ट आया, और फिर प्रॉम्प्ट इंजेक्ट किया, जिसमें ये गया और ये क्वेश्चन भी तुमने वापस डाला यहाँ पे. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन है. ये एक्चुअली हटा सकते थे मेरे हिसाब से. एनी केस, you do this, you create a regex format to match the reasoning section in the answer. Okay, ये regex इसलिए होगा शायद इसके बाद वो उससे रिवॉर्ड फंक्शन बनाएगा. E-verify it works. For this regex search start working out, end working out, let me think. Solution equal to 2 और make sure कि ये मैच कर रहा है. राइट, फॉर इंस्टेंस अगर ये मैच नहीं करता और ऐसे होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. We now want to create a reward function to match the format exactly. We reward it with 3 points if it succeeds. So match format exactly completions. Given a group of completions, for each completion allocated content, which is its response from the LLM, match if the format is exactly.
if it is not none, जो कि none होता था तो स्कोर 3 प्लस करो और स्कोर अप ऐड करते जाओ। तो 10 कंप्लीशंस होंगे तो इस एरे में 10 स्कोर्स होंगे। और ये ऐड होते जा रही है। If it fails, we want to revert the model. If it at least follows the format partially by counting its symbol. Okay, so this is approximately. तो ये किया तो एक दे दो, ये किया तो वैसे दे दो करके उसने, तो दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे उसके ऊपर है। फाइनली वी वांट टू extract the generated answer and reward or penalize it. We also reward it based on how close the answer is to the true one via ratios. Check answer. Prompts, completion or answer. So this is the true label. This is the question. This is the LLM generated answer. And this is responses. For R in response, guess. What the hell is this? Guess dot group O1. ये क्या करता भाई ग्रेस ग्रुप में? True answer or a guess? If guess is none, तो आगे बढ़ो. Correct answer gets 3 points. If guess is equal to true answer, score 3. Else if spaces are seen. Reward if the answer is close by ratios. Guess by true answer. Right, so this is for numerical, like verifiable answers, जिसमें मैं approximate निकाल सकता हूँ. तो partially सही है तो half mark types. Also sometimes it might not be one number as the answer, but like a sentence. For example, the solution is ready to be extract 20. Check number. ट्रेन करो भाई भाई.
क्या बोलते हो इस पे, कुछ क्वेश्चन है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है रिलेटिवली। आई थिंक हम्म। what I'm also trying to like make a model in my head about is every time we instantiate and train a model and use it, we are doing it in broadly the same way. तो वो हर बार कुछ नया कॉन्सेप्ट स्लैश मॉडल इंट्रोड्यूस होता है तो वो उसी फ्रेमवर्क में बैठ जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, लाइक तुमने एक मॉडल ट्रेन किया जो तुम्हारे सॉर्ट ऑफ प्री ट्रेन्ड प्रॉम्प्ट्स पे और अदर प्री कॉल्ड आउट प्रॉम्प्ट्स पे है या फॉर्मेट में है, एंड उससे तुमने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट किए और उनको रैंक किया, बस आई थिंक ब्रॉडली वही कर रहे हैं। राइट। ये क्या है अभी? कोर्स इवेंट्स क्या है? अच्छा, लाइव इवेंट विद 2 days ऑफ टॉक। PVG, DPG, PKI, UPG, a gentle visual intro to Transformer. Well, this is my development. MNTF. Buffer with Keras. How to train a model with PyTorch. It ain't broke, so let's not break it. So let's data always matters. Simple training with transformer trainer. Feature. The Hugging Face. ये किस डेट पे क्यों हुआ था ये सब अकॉर्डिंग टू दिस? Doesn't say. I'm sure कि Hugging Face के YouTube पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ. नहीं, मिल तो जाएगा, बट ऊपर लिखा था ना कि किधर? कभी किया स्टार्टिंग में। अच्छा, फॉर द रिलीज ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस कोर्स वी डू दिस, बट व्हेन वी रिलीज वी डोंट। अगर ढूंढेंगे यूट्यूब पे शायद वीडियो मिल जाएगा। वीडियो का पोस्ट डेट से पता चलेगा कि कब। कांट बी मोर देन अ ईयर अगो, आई थिंक, maybe 2।
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करें? एजेंट कोर्स करना है कि एमसीपी करते हैं? आई थिंक एजेंट करके बड़ा फायदा। Both are completely different or somewhat related, according to you? My guess is this will be sort of a superset MCP. The MC, like agentic is all about using tools, right? Making Correct. LLMs actionable, not just thinking and generating text, but making it act by integrating it with some tools. Weather का data निकालो, ये book करो, वो calculate करो types. And MCP also basically generalizes. वहाँ पे ऐसे कस्टम ग्लू कोड करना पड़ता है एजेंट के लिए, हर एक एजेंट का अलग कोड होता है. And MCP, I think, basically streamlines a lot of that. My guess is uh, this is like evolved version of agent. Not evolved version. I mean, agent will need to use MCP to communicate with each other and with models. Agent is model, na? Huh. So what? Yeah. Like, how do you communicate between models, between agents, using MCP? It's a protocol at the end of the day. So we'll understand the broad. It's like saying, do you know how to make web pages? Yes. Do you know how to host them? Yes. But do you know how to access a web page from your browser? Yeah, I think HTTP. For that, you'll need to know HTTP. So ऐसा है थोड़ा. I feel we can learn agents without really learning MCP, but MCP will be used to communicate between agents. और agentic में यहाँ पे तुम multiple agents आ जाते हैं, you will need MCP anyways. So yeah, maybe we can do MCP and then move to agents. I don't think MCP is very big. Like at the end of the day, it just protocol it defines के कैसा होना चाहिए. You won't really understand much कि वो क्यों ऐसा है. But once we start using it, using agents, then we'll probably understand it better. As per our original plan, ये कहाँ पे था? Was it MCP before this or after this? There was no MCP in the original plan, I think. Sure.
ठीक है, MCP करते एजेंट्स हैं। कोर्स में भी what are LLM ये सब है. It's like a Because complete these course are in. independent courses. हाँ, Yeah. ठीक है. Yeah, जैसे React, VX, I think this has gone out of because this is a very evolving space ना, हर दिन कुछ ना कुछ Yes, होता है. exactly. Like I was reading the ये React, VX टाइप की सारी चीज़ें अभी लोग यूज़ भी नहीं करते. But just Yeah. a year back this was in rage कि reasoning plus action. And then there was a lot of standardization अराउंड आई थिंक Oh, फंक्शन कॉलिंग लाए ओपन एआई वगैरह, तो रिएक्ट बाहर चला गया. तो इसके बाद कोई होगा तो फंक्शन कॉलिंग का होगा. फंक्शन कॉलिंग के बाद भी एमसीपी आया है, तो लोग अभी फंक्शन कॉलिंग को भी, ये देखो फंक्शन कॉलिंग आया. will MCP तो दिस be वाज अ the बोनस राइट, विच में जब तक इन्होंने here to stay? We रिएक्ट don't बनाया know. था तब तक बोनस आया, तो उसने फंक्शन कॉलिंग बनाया, और अभी उसके बाद एमसीपी आया. But essentially what React, what agent, what rag be to some agentic rag, in some instance, all they are trying to do is make LLM take action rather than just outputting some text, generating text. Make it take action. So I think whether simple agents glue code से तुम उसको tie करो, या रिएक्ट से करो, या फंक्शन कॉलिंग से करो, या अभी एमसीपी से करो, द बेसिक फंडा इज स्टिल द सेम. आई मीन द motivation is still the same. So yeah, okay, let's do MCP, uh, latest and greatest. It's a small one anyways, I think. It is Relatively. small one, yeah. Cool, Che. Let's pick it up tomorrow. ठीक है, I will stop the stream and stream end.